You like a lonely man without me. You're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the same. Because we are the team. You see the better than truth. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. You like a lonely man without me. You're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the same. Because we are the team. You see the better than truth. You like a lonely man without me. You're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the same. Because we are the team. You see the better than truth. जब ये बन के रेडी हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, 3 घंटे के लिए आपको फ्रिज के अंदर डाल देना है। फ्रिज से जब 3 घंटे के बाद आप निकालते हो ना, तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल इसके सामने फेल हो जाएगा। ठीक वैसा ही आपको दिखने वाला है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इसको यूज़ करते हो ना, उसके बाद आपको इसको फ्रिज में डाल देना है। आप आराम से इसको 10 से 15 दिन तक फिर आप यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो गीला स्पून हो ना, उसको आपके इसके अंदर आपको यूज़ नहीं करना है। आप इसे एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो। जब आप एज अ नाइट क्रीम यूज़ करते हो तो आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, झाइयाँ, झुर्रियाँ, फाइन लाइन, रिंकल्स तो हटने ही वाले हैं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। लेकिन अब अगर आप एज अ नाइट क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप एज अ फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने फेस के ऊपर लगाएं। उसके बाद अपने फेस को आप वॉश कर लें। जब भी आप वॉश करते हो तो जो भी आप डे क्रीम लगाते हो आप ज़रूर लगाएं। वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और भी अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब